हे फैंटास्टिक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ गाइस, एंड आई नो यू गाइस, आई मिस्ड यू टू। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव डन a long form video like this. And yeah, without talking too much, today we'll go to the point. And one announcement aap sabke liye, so this used to be my second channel, and now I've finally got a little bit of time, so I am going to be posting on this channel as well. So मैं वहाँ पे अपने college vlogs post करूँगी और any other content like edits and stuff, and also some of the ASMR and all the regular content जो मैं वहाँ पे उस चैनल में किया करती थी। और अगर आप लोग को उस चैनल के कंटेंट में इंटरेस्ट है, देन मेक श्योर to hit that subscribe button and also comment on the last video that we are here so I can start posting on there as well. आप लोग को पता ही है YouTube algorithm कैसी है, so please make sure to hit that like button ताकि ये वाले वीडियो बहुत सारे लोग देखें एंड एक्चुअली में जो स्लाइम रेसिपीज काम करती हैं लोग उन्हें सपोर्ट करें। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस देन मेक श्योर आप इस वीडियो में कमेंट भी करें। एंड ऑल्सो फैंटास्टिक डेयर स्लाइम्स इज ऑन एज वेल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को फीचर होना है देन मेक श्योर आप लोग अपना स्लाइम रेसिपी और एनी वीडियो जो आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को ट्राई करूँ, यू गाइस कैन गिव दोज लिंक्स in the description below, and yeah, I'll try it in the next video and you guys can get a shout out. So yeah, fantastic, that was it for the announcement. Now without talking too much, let's get started with today's video. So आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे फ्लफी स्लाइम फ्रॉम फेविगम। यस, हम लोग फेविकॉल नहीं यूज करेंगे, हम लोग सिर्फ फेविगम यूज करेंगे एंड लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल। सो ये रेसिपी का आइडिया था इनका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द शाउट आउट। एंड अगर आप लोग को भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो योर रेसिपी with your name so that I can, shout out your name as well. And yeah guys, now let's start with the recipe. So let's take our beautiful bowl. So here is our bowl. We'll take Fevigum and you guys can take any Fevigum. आप लोग को जो भी अपने घर के पास अवेलेबल है। सो दिस इज द ग्लूज दैट आई एम यूजिंग टुडे। बिल्कुल नॉर्मल जो भी आप लोग को अपने स्टेशनरी में मिलते हैं, बस वही ग्लूज। माय गॉड, ये सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट है। वाह, so guys, in total I am using 3 gum bottles, like normal size 20 ml की 3 bottles. So yeah, I'm using these. So yeah, so इससे लगभग इतना ग्लू आया है हमारे पास. Now we'll add some water because this is like really thick और हमें इसको थोड़ा सा dilute करना है because it will make the slime more fluffier. Otherwise ये बहुत ही sticky बनेगा and also बहुत ही hard बनेगा and वो हमें नहीं चाहिए. So we are going to add a little bit of water. So now I'm adding a little bit of water into it, almost half of its amount. So yeah, so अब हमने इसमें water add कर लिया है. Now we'll mix it जब तक कि पूरी तरह से वाटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तब तक. Now Fevigum has its own color, तो अगर आप लोग कलर नहीं भी ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल बी लाइक अ रियली वेरी लाइट ब्लू कलर. सो आई डोंट नो, आई थिंक मुझे इसमें कुछ कलर ऐड करना चाहिए ताकि यू गाइस कैन सी इट. सो आई थिंक मैं इसमें ऐड करूँगी
red color. So for that I am taking red food coloring, tomato red food coloring. So अब हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, like 2 to 3 drops will be enough. So yeah, हमने इसमें 3 drops ऐड करनी है. Now let's mix it. Wow, look at that color. It looks orange in the camera, I don't know why, but it's more towards dark red. So as you guys can see, now our glue mixture is almost done. So make sure कि आपका जो glue mixture है वो पानी के साथ और कलर के साथ दोनों के साथ अच्छे से मिलके रेडी हो जाए, like almost इस कंसिस्टेंसी में. एंड आफ्टर दैट आपको अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. सो इफ़ यू वांट टू ऐड एनी फ्रेग्रेंस, आप उसको इस स्टेप में ऐड कर सकते हैं. नाउ we'll add the main ingredient which will make it into a fluffy slime. I'm so excited to add, the shaving foam. It's just so satisfying. So first हम लोग बस इतना ही ऐड करेंगे and let's see how it works. So yeah, let's just mix it. Oh my god, it looks so oh my god, it looks like ice cream, you guys, and syrup. Oh my god. Wow, it has such a nice baby pink color. Oh my god. I don't know which color is appearing to you guys. Let me add a little bit more food coloring. Wow. So this is the color. I've increased the saturation of the video so that you guys can see the real color. Oh my god, it looks so pretty, you guys. So this kind of looks like इस कलर को क्या बोले हम लोग, like I can call it Peppa Pig slime also, because it looks exactly like how the Peppa Pig character looks. I don't know if you guys can see it, but it is exactly that exact shade of pink. So if you have any cousins or any brothers and sisters, you guys can make Peppa Pig slime for them. So now almost everything is done. So आप लोग इसको किसी भी form of activator से activate कर सकते हैं. Today I am using Borax activator, but you guys can also use Fantastic Lens solution. So I will give the video on the I button so you guys can see from there. So now let's start activating the slime, because I think इसमें सारा glue अच्छे से mix हो चुका है, तो हमें इसमें activate करना start कर देना चाहिए. So this is my activator, as you guys can see. Now I'll start activating it drop by drop, because you don't want to add too much. Fluffy slime में you have to be cautious, because then the whole texture will be spoiled. अब हम लोग इसको धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. As you guys can see, बस थोड़े से ही एक्टिवेटर में almost our slime is literally activated. So make sure you don't add too much, because हमारी slime थोड़े से ही एक्टिवेटर में बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रही है.
As you guys can see, oh my god. You know, ये इतना soft है, it feels like a cloud, you guys. Like, oh my god. And it is possible to make fluffy slime from, Fevigum. And oh my god, you guys, this, I literally love this. Oh my god. It is so holdable, like it is so nice. Can you guys see that? And I will give this recipe an 8.5 out of 10 because it still is not that stretchy and it can be better, but we can just fix it with adding a little bit of glycerine and stuff. But this is still like the perfect slime texture. It's really holdable. So yeah, fantastics, that was it for today's video. I hope you guys liked this, and make sure to give this video a like. It will mean the world to me, guys. Literally, it will help me a lot if you guys just hit that like button. So make sure, please hit that like button. So I'll see you guys with another amazing video. Until then, bye bye.